Good morning, friends. Welcome to my channel. It's Sunday, Easter Sunday, 20th April. I'm sitting in small garden. I just had my breakfast here in the garden itself. It's 8:42. I've already recorded a video, so I'm going to post back to back whatever is available. I'm sitting on the grass, and I've explained to you my outfit. Very beautiful outfit. And this is look of the day. The very Indian traditional look. I feel like sitting on the grass. I think I'll go and sit on the. Just sitting on the grass is far more beautiful. Can you see me? First class. चाय लेके आई थी यहाँ पे बैठ के पीने के लिए। चाय लेके आई थी यहाँ पे बैठ के पीने के लिए, मज़ा आ गया। अच्छा। सुबह सुबह फर्स्ट क्लास लगा। हाँ, मैंने बोला रोज़ जूस पीती हूँ, आज चाय पीऊँगी करके। कभी चाय भी पीना चाहिए। हाँ, कभी कभी पीती हूँ मैं। नहीं तो मैं हर्बल चाय पीती हूँ ना, आज मैंने दूध वाली चाय पी। कभी कभी पीती हूँ मैं। हर्बल चाय बोले तो क्या डालते हैं उसमें? हर्बल चाय में मेरा पुदीना रहता है या नींबू रहता है, छोटा सा टुकड़ा, अदरक। कभी कभी अलग अलग बनाती हूँ, कभी मतलब वही चाय पत्ती चाय पत्ती। हाँ, लेकिन उसको ज़्यादा उखड़ने का नहीं है, अच्छा, सिर्फ थोड़ा सा उसको सिर्फ उबालने का। थोड़ा सा उबाल के उसको जो कलर आता है उतना तक, एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं बनाने का। और मैं ऐसे वैसे पत्ती नहीं यूज़ करती, मैं टाटा गोल्ड यूज़ करती हूँ। तो टाटा गोल्ड हर्बल जैसा रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है पीने को। नहीं तो वो कितना कड़क रहता है ना, चाय पी नहीं सकते ऐसे। काली चाय कड़वी कड़वी लगती है। कड़वी लगती है, तो उसको बनाने का तरीका भी अलग रहता है और चाय की पत्ती भी अलग है, अच्छा, तो वैसा है। आज मस्त लग रहा है। हाँ, ये ना अच्छा ऐसा लग रहा है मैं डांडिया खेलने जा रही हूँ। अच्छा लग रहा है। थैंक यू। Oh, there's hardly any storage space in this. तो वैसा है। So there has to be a gap when you're having avla. You cannot be eating and what I'm trying to say is that you cannot be continuously be eating. So when you're having lemon water, avla and lemon water is citrus, so you should not mix it. Once you get up, you should have. I have that copper water. Then after having copper water, I have copper glass water, copper tumbler water. Then I have lemon water. In fact, I have 4 glasses of water in the morning because it's so dehydrating. Because before I take my bath, 2 glasses of water. Then after I take my bath and finish off all my routine, then I have another 2 glasses of water because it is very very dehydrating. And avla on the way, because avla is citrus. So never mixed fruits. I've seen people mixing all kinds of fruit bowl, fruit salad, fruit custard. They're just eating and eating. My head will explode when I see people mixing milk and mango and all that. Ideally, you should not mix all these things and have frozen yogurt. I see people mixing everything in dahi and eating it. I find it very, I don't know, that's something about me, I guess. You should not be mixing all these things and eating. Eat your food as it is. If you are having curds, then curd rice. Curd rice is a probiotic. And when you are living in a heaty country, you should not be having this much curds, because curds, yogurt is heat. That is, it is eaten in Western countries. Frozen yogurt, why? Because so that it gives them heat. Curds by itself is very heaty, so this lassi, a meaty lassi and all will generate more heat in your body. People think अरे ये तो ठंडी लस्सी है, आइस डाल के पी रहे हैं। तो जो लस्सी जो होती है वो गरम रहती है. It is of high heat. It generates heat in the body. कितना गंदा है उधर।
कहाँ पर? वैसा हाँ हाँ, वो तो है, केयर नहीं करते हैं, हाँ। और नहीं है ना, कब अभी ये भी की नहीं कभी है ना ये अच्छी, एक्चुअली ना उनको ये भी साफ करना चाहिए, करना चाहिए, बट वो नहीं चाहिए। करते नहीं है। ये क्या कोई थूक देता है, कोई क्या हाँ, करता है, कोई क्या। ये पता नहीं क्या है, बट देखो ना काला हाँ, काला वो बैठते हैं ना, शिशी नॉनसेंस, हाँ। एवड़े बेवड़े कभी बैठ जाते हैं। वही मुझे ना ऐसा लगा एक दो बार कि वहाँ पे पिंप था ना, कि खुद ही पानी मार के या मैं साफ करके बैठ जाऊँ, लेकिन पिंप ही गायब हो गया। ऐसा हो गया। ये सब धोना चाहिए लोग को आते तो नहीं, हाँ हाँ, पाइप से। सही कहा। So why do you think I'm grounded? When I used to be living with this lady, and she used to see to that I don't come to the park. She used to say no, do बर्तन धोने हैं कुछ, मैंने बोला कुछ नहीं, मेरा काम है ना, मैं कर लूँगी, and that's the kind of habit I kept to coming to the small garden, going to the park, going to, this is how you ground yourself. Even if you're working, when people say we don't have the time, wake up early. When you wake up early, and oh, but we have to rush, yeah, you have to rush, but if you wake up early, you will have all the time in the world. But if you're sleeping at 12 o'clock, 1 o'clock, being on social media, sleep at around 9:30, wake up early at around 5:30, take your shower, whatever you have to do, have your breakfast. Wherever you can find a green place, please spend some time, and then come back home half an hour, and then go for your office or something. I think everybody can do that if they want to. Otherwise, what else? I am a kind of a person who's very particular about my grounding is only because of this, my routine. I always find my Nana Nani park. If I don't go to Pond Park, I will go to Nana Nani park. And for me, it is always 3 kilometers in the morning. And if I go to the Pond Park, it is 4 kilometers. If I don't go to the Pond Park and I go to Nana Nani park, it is still 3 kilometers up and down. So I do that. ये थोड़ा सा स्वच्छ क्यों होता है ना, क्योंकि सूरज की किरण पड़ती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा साफ लगता है, क्योंकि इतनी धूप पड़ती है तो जो भी ब्राउन नहीं मारा ये नहीं, बहुत ही गंदा है। हाँ, ये मैं इसकी बात करती हूँ, इसमें सूरज का गरम गरम होता है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिसने मतलब वो अच्छा रहता है, क्योंकि सूखता रहता है हवे में, नहीं तो ये कितना गंदा रहेगा, बहुत गंदा रहता है। और फिर लोग आके बैठ जाते तो वो साफ हो जाते हैं। ये पाइप मारते हैं नहीं, हाँ करता, और थोड़ा मैं करने वाली थी एक्चुअली, मैं करने वाली पे जो मारना चाहिए। एक्चुअली ना, मैंने सोचा पिंप है तो मैं ही खुद बाल्टी लेके यहाँ पे साफ़ करूँ, क्योंकि मुझसे देखा नहीं गया। फिर मैंने बोला वो पिंप ही गायब हो गया, वरना मैं वो कर लेती। मैंने बोला कोई और करे ना करे, मैं खुद ही करूँगी, जहाँ ये 2 बेंचेस है वहाँ तक तो मैं करूँगी, बाकी का मुझे पता नहीं, इतना तो मैं कर ले, लेकिन है ही नहीं, गायब ही हो गया वो पिंप। So find your safe space. Your safe space is greenery and grounding, nothing else. No social media, no bakwas, no news. Cut down on news, cut down on being hyperactive about things which don't make sense. See, look at this. Oh, now I remembered that outfit. I will remove that outfit and wear it. I've got only 12 minutes. All my storage space is also gone. I'm feeling very peaceful right now because I had a different breakfast. I did different things, so I'm finding myself very nice. See, I want to show you all the rat. That whatever they show in the cartoon, na, like animals, ko they personify. It's not so.
See, you can see the rat. These rats have every bird in the ecosystem have their own place or their own thing. They are contributing to the ecosystem in their own way. आपने नाश्ता किया? नहीं अभी नहीं किया है। अच्छा कोई बात नहीं. So I have this eye for things, picking up things. It's nothing to be having expensive stuff or cheap stuff. It is the eye for beauty, the eye for artistic things. So I think I'm blessed with that, you know. So all my outfits are very unique. Very, very unique. And whatever outfits I've picked for my bandi also, if there is a real good kurtas, then I have picked up and I have selected for them. And then she used to eye my kurtas also. So take it, wear it. Just wear it, but just leave me alone. But she cannot be, we both cannot have the same thing because she's old, and when you're old you lose muscles. When you lose muscle you shrink up. So no matter what kind of outfits you wear, it doesn't look all that great. And plus if you have rotten attitude you look like a witch. Look at them.